Hey guys, so as we all know that only 2 months are left for upcoming NEET PG exam, so we'll discuss the things that you should be doing and that you should not be doing in these 2 months. Also, we'll discuss the strategy differently for peoples with different targets. Suppose you have a target of less than 1,000, then the strategy would be different for you. Similarly, if you have a target of less than 10,000 or a target of less than 20,000, or maybe a target to just qualify the exam. So first thing that I would like to say is कि किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में अर्लियर फेज इज अ लिटिल स्लोअर बट लास्ट के 2 या 2.5 या 3 months is very very important and the whole rank decides on the basis of how well you are preparing this 2 to 2.5 months. सो आपने पहले कितना भी अच्छा प्रिपेयर किया हो, अगर आपने इस 2 to 2.5 months में सब फकअप कर दिया तो नो वन कैन सेव यू। एंड सिमिलरली अगर आपने इस 2 to 2.5 months में जो पहले की गलतियां वो भी रिकवर कर ली, then there is again a very great chance of you getting succeed. So coming on to the things that you should not be doing in this 2 to 2.5 months. First thing is don't compare your GT marks or preparation level with others because you all have different targets and have different ways. So let's say when I was preparing, when I gave my first GT, I didn't get a very good score, while my colleagues were getting great marks because their way of preparation was different. They were preparing from the UG time. They very well read the textbooks. So their way of preparation was very different. So you should never compare your GT marks with others because one thing is कि everyone has different ways. कुछ लोगों को लास्ट में पढ़ना बहुत पसंद होता है, कुछ लोग स्टार्टिंग से ही कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा. So everyone has different ways and everyone has different targets too. Suppose your target is 10,000, 20,000 rank. And it's not bad to have such targets because realistic targets बनाना is again very important. Because फिर अगर आप ऐसे unrealistic targets बनाओगे कि मैं टॉप 100 में ही आऊंगा and you know that you are not at such a great level of your preparation again, एंड ऑल्सो आप उस रैंक के लिए आप मतलब योर ब्रांच पे आपको वो नहीं चाहिए. सो बेटर टू हैव अ रियलिस्टिक टारगेट्स ताकि आप फिर उस रेंज में तो आ पाओ. इफ यू विल मेक अनरियलिस्टिक टारगेट, सपोज आपने आज प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड यू आर थिंकिंग टू गेट अ टॉप 100 रैंक इन नीट पीजी विच इज अगेन पॉसिबल इफ यू आर वेल रेड इन योर यूजी. बट अगेन आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रखा एंड यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ. यू इफ यू मेक अ अनरियलिस्टिक टारगेट तो फिर आप जो रियलिस्टिक टारगेट्स है वो भी अचीव नहीं कर पाओगे. Now another thing is you should not be using any new source from now on. कोई कुछ भी कहे कि यार ये सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार तो सारा पेपर इसी सोर्स से आएगा. जस्ट डोंट ट्राई टू स्विच टू एनी न्यू सोर्स. डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल डे. इस पॉइंट से अभी तक आपने कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आज मूड नहीं है, आज नहीं पढ़ते, आज मूवी देख लेते हैं, आज कुछ कर लेते हैं. बट वो टाइम अब चला गया, अब आपका मूड खराब है, अब आपका मन नहीं कर रहा, अब आप डिमोटिवेटेड हो, तब भी बुक लेके बैठे रहो. अगर रिवीजन करने का आज मन नहीं है तो आज ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लो. अगर क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं है तो आज एक ग्रैंड टेस्ट दे दो, दो ग्रैंड टेस्ट दे दो, ठीक है, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है. बट डोंट डोंट स्किप योर प्रिपरेशन. ऐसा नहीं कि आज खाली बैठ जाते हैं. डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल डे आज से लेकर टिल योर एग्जाम. डोंट स्टॉप प्रिपेयरिंग. When I was preparing, there was this thing what my seniors used to say is कि whoever will prepare till the last day of the exam will definitely succeed. And दिस इज व्हाट आई रियलाइज टू कि मेरे साथ जो लोग लाइब्रेरी में बैठते थे, सो एग्जाम आने आने तक काफ़ी लोग कम हो गए थे. सम पीपल लॉस्ट मोटिवेशन, कुछ को लगने लगा कि हम नेक्स्ट नीट का प्रिपेयर करेंगे, नेक्स्ट आईनी सेट का प्रिपेयर करेंगे. तो जो बैठते थे टिल द डे ऑफ द एग्जाम सबकी सिलेक्शन हो गई. सो प्रिपेयर टिल द डे ऑफ द एग्जाम. And last thing is don't talk much with your competitors at this stage. Earlier you used to talk, that was good. Because पहले क्या होता है कि आप competitors से talk करते हो तो there is this positive reinforcement. पॉजिटिव कंपटीशन होता है, पॉजिटिव चीज़ें पता लगती हैं, यू गेट मोटिवेटेड. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज मोर चांस ऑफ यू गेटिंग डिमोटिवेटेड. So don't talk much with them. Whatever you are doing, whatever you studied till now is good, and you just have to consolidate it in next few months. Okay. Now coming on to the things which you should do. So first thing is you should sit for long hours. There is no alternative to it. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार नहीं हो रहा, नहीं बैठा जा रहा, स्टिल बुक बंद करके 2 घंटे 1 घंटा मोबाइल पे मूवी देख लो एंड देन स्टार्ट अगेन. क्योंकि अगर आप वहां से उठ के जाओगे तो यू नेवर नो कि आप 10 घंटे 12 घंटे नेक्स्ट डे आओगे वापस. तो इट विल वेस्ट अ फुल डे रेदर देन दैट
कीप सिटिंग देयर, 1-2 घंटे का ब्रेक ले लो बैठे बैठे एंड जस्ट रीस्टार्ट अगेन। रिवाइज 20th कॉपी फ्रिक्वेंटली बिकॉज लास्ट के फ्यू डेज में वॉलेटाइल टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ट्रस्ट मी, 50-50 का खेल है। 50% टॉपिक्स आप अपने रटने से ही सॉल्व कर पाओगे एंड 50% आर जस्ट कंसेप्चुअल थिंग्स। ओके, एंड ट्रस्ट मी, जो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इनमें ये जो 50% है रटने वाली चीज़, इनका बहुत ज़्यादा रोल है। Give at least 5 GTs from now on, as you have 60 to 70 days left. If you can go for a mock GT जो सेंटर पे जाके होता है, it's well and good, because when I gave my mock GT I realized कि वो एग्जाम सेंटर वाला प्रेशर पहुंचने का, वहाँ पे एक माहौल में बैठ के सब लोगों के साथ एग्जाम पेपर कंप्लीट करने में, it's really a great experience. And another thing is you should be solving 40 to 50 questions per day. It's better to solve previous year questions. You can solve previous year questions directly, or you can just make a custom models of them. But try to solve at least 40 to 50 questions per day. In that way, your previous year questions of NEET and FMG will be covered mostly of last 3 to 5 years. Now, discussing the strategy differently for the people with different targets. So our first range of people are who are targeting a rank under 1000. So anybody who is getting a rank under 1000 can definitely get a rank under 100. So सबकी preparation level under 1000 almost nearly same होती है. It's just the day, or maybe the some of the silly mistakes that you do more, or maybe some of the undergraduate knowledge that you have more. But नियर नॉर्मली अगर आप देखोगे तो सबकी प्रिपरेशन लेवल सेम होती है, एंड यूल सी कि टॉप जो यहाँ पे सपोज किसी की 900 रैंक आई नीट में, तो दे आर गेटिंग अ रैंक ऑफ 50 और अंडर 100 इन आई सेट, तो सबके प्रिपरेशन लेवल सेम है. So what you should be doing is in these remaining time is you should be practicing PYQs of INESET, NEET PG and FMG. So NEET PG and FMG तो सबको ही करना है previous year questions, but for you guys it is really mandatory to solve the previous year questions of INESET too, because INESET questions have chances of coming in NEET PG definitely directly or through the topics. So you should be practicing that at least 5 years. एंड अभी आपने अगर एक बार कर भी लिया तो ट्राई टू सॉल्व देम अगेन इन द कमिंग मंथ. Okay, now you should be practicing 6 GTs at least, and in all GTs, try to track your silly mistakes, because since you're well versed with your notes, your revision is going great. You should try to decrease your silly mistakes, because if you are a person who is getting a rank under 1000, कहीं ना कहीं silly mistakes will keep you on the higher side कि 900,000 rank अगर किसी की आ रही है और किसी की 200-300 आ रही है, तो when they'll discuss about their exam, you'll realize that the number of silly mistakes is what is making the difference. It's not the level of your preparation. So try to decrease your silly mistakes in subsequent GTs. You should be doing at least 2 revisions in these 2 to 2.5 months. अगर आपने इमेज बेस के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा सोर्स किया है, या फिर मैरो प्रेपरेटर के भी इमेज बेस्ड वीडियोस देखें, ट्राई टू रिवाइज देम अगेन, बिकॉज इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी स्कोरिंग. अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो दे ट्राई कि आप उसमें कंफ्यूज हो, बट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी डायरेक्ट. अगर आपने इमेज पहचान ली तो इट्स 90% श्योर दैट योर आंसर वुड बी राइट. You should be revising your 20th copy per weekly, and you should be staying confident and positive, because that is what will make the difference. So you should be staying positive and confident, because in that way you will not be wasting your time or on self doubt as well as on FOMO. Okay. Now, discussing about the people whose target is less than 10,000. So you should be doing PYQs of NEET PG and FMG definitely of at least 5 years. FMG PYQs are really important for NEET PG because one-liners are asked in FMG, and NEET PG में भी कहीं ना कहीं one-liners directly भी और indirectly they have a tendency to ask. Okay, you should be revising at least once, और time मिलता है तो उससे ज़्यादा. Again, 20th copy or should be revised weekly, or if you have a BTR, then revise it on a weekly basis. And you should be giving at least 5 GTs. Okay. Now coming on to people whose target is a rank under 20,000. So you should again be doing PYQs of NEET PG and FMG of 5 years again. So PYQs की and PPL PYTs की importance ज़्यादा हो जाती है if you're targeting a higher rank, because you should be focusing on these things more. अगर आप रिवाइज नहीं भी कर पा रहे, अगर आप रिटेन नहीं भी कर पा रहे your notes,
So you should be focusing on these things. So if your target is a rank under 20,000, just to previous year questions of NEET and FMG of 5 years, along with the previous year topics. So if you are doing a question on a particular topic, try to revise that topic from the explanation that is given in the question or from your source. And you should be revising your 20th copy if you prepared it, or BTR if you have it, or DVT. Whatever you have done, you should be revising it. और revision is something जो आप साइड बाय साइड करते रहो. अगर कंप्लीट हो जाता है एक बार टिल द एग्जाम, इट्स ओके. नहीं होता है तब भी चलेगा. यू शुड बी फोकसिंग ऑन first three things: previous year questions and previous year topics, and 20th copy BTR DVT, whatever you have here with you. And GTs you should be giving again 3 to 4. Okay. Now, it's the last class of people who just want to qualify and get a seat. So for them, I would recommend go for previous year questions of FMG and NEET PG again of 5 years. Okay. Uh, Other than that, do PYTs from the explanation only that is given in the app, or maybe from the notes. And BT या DVT या रैपिड रिवीजन जो भी आपने लिया है, उसको साइड बाय साइड रिवाइज करते रहो. जस्ट डोंट सेट अ टारगेट फॉर यू कि आपको 4 बार 5 बार लास्ट 2 मंथ्स में पढ़ना है. जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग इट जितना आपसे हो रहा है. बट फोकस ऑन PYQs and PYTs. And 2 3 GTs you should be practicing, and you will definitely qualify. If you will focus on PYQs and PYTs only, you'll definitely qualify. Side by side, you should be doing BTR, DVT, rapid revision, either of these, and 2 3 GTs. Okay. So all the best. This was a somewhat longer video, but I really tried to segregate it for different types of people and for the people with different targets. All the best.